arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है. आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए. ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए. आज कल से शुरू हो रहा है. ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें. आराम से करिए. टेक योर टाइम. 4 महीने है. बाय September 30th प्लीज एक्सचेंज इट. And time is given up to September 30th so that it is taken seriously. Because otherwise, if you leave it open-ended, then it becomes a kind of a endless process. You have also raised the question after 30th September, yeah. What? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that, this will happen or that will happen. Through you, let me assure all of you, let me assure every viewer, let me assure also the readers of the print media, and also let me assure, so many people, Indians who are living abroad, or who have gone on a foreign trip for a long foreign trip. There are elderly people who visit their children in the United States or other countries for 6 months and all. There are many Indian youngsters with H-1B visa who are working in the US and other places. There are many Indians who live abroad. Through you, let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है. आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट. आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं. जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे. सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस तरफ आप सर्कुलेशन विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं. नहीं, आप देखिए मैं आता हूँ. नहीं, सुनिए. आप 1 by 1 करिए ना. मैं Can you unequivocally state that it will not be banned after 30 seconds? नहीं, एक तरफ सर्कुलेशन विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ करें लीगल टेंडर रहेगा. नहीं, मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन, सुन लिया. मैं अभी उत्तर देता हूँ, लेकिन एक एक करके पूछिए ना. अगर 4 लोग पूछेंगे तो मैं एक स्टेटमेंट जो आपने September 30 के बाद क्या होगा. देखिए, September 30th का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए. आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है. इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए. 4 महीने की समय है. कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट September 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए. तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है. और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर. ये मेरा आश्वासन है. और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई कंसर्न की बात नहीं है. आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है. देखिए, मैं तो देखिए, नहीं, आप एक रुक लीजिए.
अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही है। लक्ष्मण प्लीज सर मेरा नहीं लुक, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट हियर, आई विल गो राउंड, सो देयरफॉर प्लीज हैव पेशेंस। सर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या हुआ? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले से इसका adding, जवाब so दे what देंगे। is happening, sir, is No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते मेरे हैं। सवाल आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. We'll decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? Yes, वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. It's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait. We will wait. How much notes are coming? I cannot make a give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। Yes, one question. One criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। या देयर वाज वन क्वेश्चन हियर। So Mr. Arun Jaitley, at the time of demonetization, when 2000 was coming in, had said that this is a stopgap arrangement because a high denomination like rupees 2000, there always will be problems of integrity of a currency of that, because of that currency. Is it still a belief in the RBI and the government that high denominations should technically be avoided? You see, man, just as I explained, these notes were primarily issued to replenish the currency, what you call remonetization. That purpose has been fulfilled. Now, what you say, what you have just pointed out is right. I mean, when you have you see our high value notes, these 2000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far, their security features have not been breached, not been compromised. Market में the so-called fake currency which you are seeing, there most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high-value currency notes have not been breached. But I mean, in any system there are always efforts. Most of the efforts, it was seen earlier, they take place outside the country to breach the security features and to sort of inject fake currency into the system. So a high value note is always prone to,
it always is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, I mean. But this time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. No, please. Let's say it's close to the 2014 exercise in which the old notes of 2005 were withdrawn. Is it a similar exercise? It's a similar exercise. You have said that. So will the large cash deposits be the part of the scrutiny of the RBI as well, or will there be any cash limit to that when people will go and देखिए आरबीआई तो कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करता है, बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं. लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने कैश ये किया, हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं. जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको सीटीआर एसटीआर वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं. Sir, there are reports that some bank ATMs still have 2,000 rupee note. So are banks being asked to withdraw those? देखिए बैंकों में most of the banks, because the demand was not in the market, the demand was not for 2,000 rupee notes. So taking into account the demand in the market, demand from customers, most of the banks have modified most of their ATMs. Some places here and there they may be having 2,000 rupee notes still being given in the, in the ATMs. The banks will have to modify that, yeah. Sir, last time when the demonetization had happened, the proposal was moved by the government. So this time, and like we've discussed that earlier as well, this whole denomination was introduced to replenish the system. So was this also proposed by the government or this was RBI? No, ये सब internal processes, so these are not valid questions in which the public is interested. These are procedures. Yeah, Sapna. Sir, two questions. So you have explained in detail in your press release as well as in your quotes today that what's the intention behind the phasing out. But still some people, still this question arises in our minds, sir, that was this really required? Let me ask my question so that you can answer. Like, was this really required in the sense that when the circulation has already fallen from its peak of 37% to under 11%, people are not using it? No, that's a view. I mean, I understand what you are saying. But That's a viewpoint. No, that's a viewpoint. The question of timing can be raised at any point of time. Why did you do now? Why not later? If you do later, why are you doing now? Why not earlier? So timing is a matter of, I think it's not it's not really relevant. And with regard to the other part you said. And secondly, sir, also, this question arises that with these kind of moves, maybe a kind of a question arises in people's minds that is our currency management system absolutely credible? Indian currency management system is very robust. Our exchange rate is among the least volatile among our peer countries. Vis-a-vis the dollar, normally we see the exchange rate against the dollar. अब डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो रुपये का जो exchange rate है, it has remained stable despite the crisis of, crisis in the international financial markets created due to the war in Ukraine, the failure of certain banks in advanced economies. Indian currency system, Indian exchange system, that is exchange of our currency, the exchange rate, market exchange rate of our currency is very stable. Indian currency management is very robust, and I just pointed out that the security features of this new Mahatma Gandhi series notes have not been breached. So the integrity of our currencies continue. Yeah. Sir, I have a question. You will be sucking out large number of 2,000 rupee notes. So are you also injecting new 500 and other denomination notes in the system so that, to make the up for the supply is not 10%? affected? No, it will depend on the demand of the people. That is, some of it will get deposited into bank accounts.
Some of it will be exchanged. So what is exchanged across the counter, it goes back immediately. What is deposited in the bank accounts depends on the account holders and the customers. If they want to withdraw, they will withdraw. So just a sec. So if they want to withdraw, they will withdraw. And so far as liquidity in the system is concerned, the RBI monitors the liquidity in the system, whether it is tight or it is loose. Last week we undertook, not for this purpose, but last week you would have seen, we have undertaken a variable rate repo auction of rupees 50,000 crores. It was a variable rate repo auction. We got bids for 46,400 crores, and that was given to the banking system. The RBI on a day-to-day basis monitors the liquidity in the system, and we respond to it. एक मिनट Yeah. सर जैसे कि आपने बोला है कि रिपीट मत करिए ना कोई रिपीटेशन नहीं सर। 3,62,000 करोड़ रुपए जो 2000 के नोट के फॉर्म में हो सर्कुलेशन में है, क्या आपको लगता है कि 30 सितंबर तक ये सारा पैसा जो सिस्टम में वापस आ जाएगा सर? और no, मैंने तो कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मोस्ट ऑफ दिस नोट्स विल कम बैक। यस सर, अगर ये नहीं आया सितंबर तक तो क्या ये दिसंबर? इसका भी मैंने जवाब दे चुका हूं कि देखिए अभी तो शुरू नहीं हुआ एक्सचेंज, कल से शुरू होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वापस आ जाएंगे, तो उस वक्त देखेंगे ना। सॉरी यस प्लीज। Yeah, so on the liquidity, so you know this 3 Let me listen to the question. Yeah, I'll listen. Look, yeah. Tell me, please. Yeah, so of this on the liquidity issue, even if it is 10-11% of the total cash, so in your estimates, how much would you need to print of additional 500 or 100 notes? You know, because even if it's 10%, it's not a small amount. Let me assure you, we have more than adequate quantity of notes available, already printed. We have more than adequate quantity of printed notes already available in the system, not just with the RBI, but also at the currency chests which are operated by the banks. So there is adequate stocks available, and there is no reason to worry whatsoever. Sir. We have sufficient stocks, more than sufficient stocks. Sir, I'll just come. सर 20,000 की आपने लिमिट रखी है सर, ये लिमिट तो 50,000 भी हो सकती थी क्योंकि पैन कार्ड की जरूरत तो आपको 50,000 से ऊपर रहती है। सेकेंडली सर जो आपने इसे 20,000 आप देखिए 2014 में, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 2014 में जनवरी में जो 2013 जो कि जनवरी 2014 में जो 5 पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस। अभी भी 10 पीसेस किया है, 2000 इंटू 10 पीसेस 20,000 बनता है। तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशंस है, other customers are there, लेकिन currency notes are available in adequate quantity, चिंता ही कोई कारण नहीं। So do you expect any sort of impact on banking system liquidity, like let's say less than demonetization, because like you said you've been adding liquidity, but the RBI No, we added liquidity only last week because the liquidity appeared to be But the RBI has been in withdrawal of accommodation mode. So do you expect any sort of temporary? No. The liquidity system will be managed. Last week we undertook variable rate repo auction of 50,000 crores because at the system level there was still about 1 lakh crore liquidity available at the system level. But certain entities, certain banks had more liquidity, certain banks were running short of liquidity. So our operation of repo operation last week was only to address the problems of such banks which did not have liquidity. I think 2 more questions, I will stop. Is there possibility to reintroduce rupees 1,000 notes? देखिए वो स्पेकुलेटिव है अभी प्लीज, वो स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। ओके या सर, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डू यू सी ऑफ दिस ऑन द इकोनॉमी इन जनरल, एंड डू यू सी अ सर्ज इन परचेजेस ऑफ गोल्ड एंड रियल एस्टेट? देखिए परचेजेस ऑफ गोल्ड रियल एस्टेट के बारे में मैं कह नहीं सकता, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल. I am saying very marginal because
It's only 10.8% of the currency in circulation. And as you know, 2000 rupee notes were not commonly used in any transactions. I have not seen, or in fact anecdotally, and we have done also some informal survey in various locations in India, we have found that hardly it is used for carrying out, hardly 2000 rupee notes are used for carrying out transactions. So therefore economic activity will not be impacted. Thank you. सिर्फ इतना बोल दिए कि इस फैसले के बावजूद अब 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, दुकानदार को एक्सेप्ट करना होगा अगर ऐसा होता तो देखिए टेंडर है, तो इतना बोल दीजिए। देखिए 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही, हमने नोटिफिकेशन ने कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है। बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है। एंड लेट मी वंस अगेन कंक्लूड बाय सेइंग दैट व्हाटएवर डिफिकल्टीज एंड कंसर्न्स आर देयर व्हिच पीपल हैव, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. Thank you very much for. Right. So the RBI Governor Shaktikanta Das, on the purge of the 2000 rupee notes, he said that it's going to make a very minimal impact on the economy, saying that the banks are going to be well prepared to deal with the situation of people who are coming forward to exchange these notes, the limits that are in place, and issuing the clarification on the panic that initially set in on the RBI deciding to purge the 2000 rupee notes. On that note, we're slipping into a very short break here. We'll be right back. To stay with us. गाइस, एमजी कॉमेट के इंटीरियर की कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। फैन को करते हैं थोड़ा स्लो और शुरू करते हैं किससे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि इसे स्टार्ट करने के लिए चाबी कहाँ गई भाई? चाबी मेरे पॉकेट में है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आपको कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस खूबसूरत सी क्यूट सी जो चाबी है उसका अनलॉक बटन दबाइए, इस कार में बैठिए, 2 बार ब्रेक पेडल को दबाइए और कार इज रेडी टू गो। तो एक ये इंटरेस्टिंग आपको एस्पेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10.25 इंच के आपको 2 स्क्रीन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग इंप्रेसिव चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो लुक और फील है और जो फीचर्स है, एमजी की गाड़ियों में आपने फीचर्स वैसे भी काफ़ी जो लिस्ट रही है उससे लंबा ही देखा है उस लिस्ट को। यहाँ पे भी आपको उस हिसाब से ये लोडेड ही नज़र आएगी। एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, ये सभी आपको वायरलेस भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जो फील है, जो इसका रिस्पॉन्स, वो मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव सा लग रहा है। और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइब्रेंट सा भी आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जगह, अब इलेक्ट्रिक कार है तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन तो आपको अलग अलग सेटअप में मिलेगा। लेफ्ट साइड में वोल्ट, करंट और पावर वगैरह की जानकारी आपको मिलेगी। ऊपर जो है कुछ एक जो साइंस है उसमें एक यूनिक या एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पिछली सीट पर जब आप बैठे हैं, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया तो भी इसमें बीपर जो है आपको याद दिलाएगा। राइट साइड में यहाँ पर फिलहाल न्यूट्रल में है गाड़ी, वो दिखा रही है। स्पीड आपको दिखाएगी, 72% बैटरी इसमें बची है। जो रेंज है वो 144 किलोमीटर इसमें देखने को मिल रहा है और ओडो इसका 199 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पर लेफ्ट में एक आप ग्रीन में छोटा सा देखेंगे इको मोड, उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइव सेलेक्ट मोड है या ड्राइव मोड सेलेक्ट, इसे जब दबाएं तो यहाँ नॉर्मल मोड होगा, स्पोर्ट्स मोड होगा और इको मोड होगा। तो यहाँ पर जब मैं नॉर्मल मोड में दबाता हूँ तो रेंज इज 142, स्पोर्ट्स मोड में दबाया है तो रेंज इज 142। सो आई गेस जब ड्राइव करेंगे तब शायद इसमें चेंज हमें नज़र आएगा। इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी हम तब डिटेल में
बात करेंगे। फिनिश है, जो कलर्स हैं, जो यहाँ पर फैब्रिक जैसा मटेरियल है, जो प्लास्टिक है, उसकी क्वालिटी मुझे प्रीमियम लग रही है। लाइट ग्रे, ऑफ वाइट, क्रीम, इन सब के इस्तेमाल के साथ ज़्यादा स्पेशियस और ज़्यादा प्रीमियम फील आपको नज़र इसमें आ रही है। बहुत ही मिनिमल है, तो ढेर सारे बटन सब। Welcome back. Let's get you breaking updates that are coming in from West Bengal. Update coming in of 3 people who have been killed in another explosion that has been reported. This is in another location that has taken place in the state of West Bengal. 3 people have lost their lives, including a minor. 2 women were making firecrackers on the rooftop of the house when the place caught fire, resulting in the blast. One of the women being rushed to the hospital, and she is said to have died en route to the hospital, while the other victim, a woman and a child, also lost their life on the spot. My colleague Adrija joining us over the phone line with the details. Adrija, even as concerns continue over the Mednipur blast, now update coming in of another firecracker blast that has taken place. What are the details? Well, absolutely. It's not even been a week since, a illegal firecracker factory blast has taken place in the Mednipur district, and this time in a different location. It is in the South 24 Parganas district, in this area called Bajbaj, where this explosion has taken place in a house where 2 women were making firecrackers on their rooftop, and there was a fire there, and that had led to this explosion, which took lives of 3 people, including a minor, a 12-year-old girl who has lost her life in that explosion. The owner of the firecracker, allegedly the factory, was not at home at that moment. However, his wife, who was making the firecracker, has lost her life. Another woman was rushed to the hospital from this location, but however, she has succumbed to her injuries by the time she reached the hospital. So yes, another firecracker factory, illegal firecracker factory, firecrackers being manufactured at different locations and claiming lives of people, absolutely in a state of concern. Okay, all right. Any more details coming in? Because clearly the safety standards were not met. So any word on who the owner of the firecracker unit is? Because you mentioned that it is also illegal. Absolutely, this was not even like a proper factory. The firecrackers were being manufactured on the rooftop of a house, and hence definitely no, safety precautions were taken, and therefore when the explosion actually did take place, it claimed lives of people. So this entire area, in fact, people manufacture firecrackers in this entire Bajbaj area. They construct firecrackers throughout the year. So therefore, this illegal firecracker factory is definitely a concern, but it has been going on for a lot of times. And right now, however, police have been deployed at the area. They are, searching for more such firecrackers. And, as we have seen, like a similar incident also taken place in Mednipur. So, yes, yes, but questions being raised on the Mamata Banerjee government, lives being lost, but no action being taken on ground. Adrija, thank you for joining us with those details. We're slipping into a short break here. On that note, we'll be right back. Stay with us. Whether you're an aspiring influencer or just want to create memories using your mobile phone cameras, I am here to share some really amazing 10 mobile photography tips that can actually turn your ordinary photos into some really good Instagram-worthy photos. मतलब आपका photo game एकदम next level amazing होने वाला है after knowing all my tips. But before I share these tips with you, allow me to introduce myself. You're already watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to count on the 10 amazing mobile photography tips that I have listed for you guys. Let's begin. So tip number 1, lock focus. So as soon as you open your camera software, जो आपका subject है उसके ऊपर, you just have to tap and hold it until this yellow box appears. ऊपर आपको दिखाई देगा एक छोटा सा tag saying
AFAE log. Now what this means is कि जो अगर आपका subject move भी कर रहा है, you'll get really sharp photos as well as the well balanced exposure. Tip number 2, rule of thirds. Now try to not position your subject in center. Maybe just position them on one of the grid lines. This makes for a visually appealing photos as well as videos. Tip number 3, use full megapixels. क्या मतलब है इसका? The smartphones these days boast 48 megapixel sensor, 50, 64 and sometimes 108 megapixel sensor as well. इस केस में क्या होता है? Whenever you click any picture, the smartphone by default clicks your photo at 12 megapixel using the pixel binning technology. अब इसका क्या इलाज है? You have to go to the camera settings. वहाँ पर जाकर आपको high resolution photos पर select करना होगा ताकि जो आपकी फोटोज हैं वो सेंसर का फुल मेगापिक्सल इस्तेमाल करें और आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स अपने फोटोज में दिखाई दे. टिप नंबर 4, शूट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर. उप्स, वैसे तो ये भी नहीं है. दैट इज द आवर 1 hour आफ्टर द सनराइज एंड 1 hour बिफोर द सनसेट. The light at that point of time is absolutely perfect. आपको warm light मिलता है, soft light मिलता है और आपकी photos come out really very excellent in terms of colors. Or I think I should also own my photography tip and start shooting in the golden hour and not in the harsh light maybe. Okay. Tip number 5, use burst mode. This is the most underused feature on all smartphones. Android पे भी मिलता है और iPhone पे भी मिलता है. Very simple to use. You just have to tap and hold the shutter button on your camera software and the camera will click multiple photos in just a few seconds. This is a really great feature just in case you want to capture any movement, dogs, birds या फिर अगर आपको candid shots चाहिए तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Tip number 6, just like burst mode, you can also make use of the portrait mode. This will Welcome back. The Maharashtra NCP chief Jayant Patil is all set to appear before the Enforcement Directorate and the second summons that have been issued to him. The NCP workers, meanwhile, are staging a protest at the Enforcement Directorate office, calling it nothing but vendetta. My colleague Arunil Saradekar joining us on the broadcast with the details of the protest that's ongoing right outside the central agency's office. Arunil, what's happening there? Well, Pratibha, at present I'm outside. Basically, at present I'm on the road which connects the NCP office to the Enforcement Directorate. Jayant Patil has crossed this barricade and he has gone to the Enforcement Directorate office. You can see the NCP workers are protesting here in large numbers, basically saying that the entire ED action against Jayant Patil is unjustified. It is vendetta politics. That is what the NCP workers here are saying. Basically, I'm showing you the mood out here how there is an aggressive protest that has been undertaken by the NCP workers over here. We'll try and speak to you. आपसे बात करेंगे. आपको क्या कहता है कहना है जयंत पाटिल जी को बुलाया गया है ईडी ऑफिस में. ILFS का केस है ये. देखिए, जयंत पाटिल साहब का कंपनी की किसी भी इससे संबंध नहीं है और जो बुलाया गया है ये लोकशाही को धड़पने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी का ये षड्यंत्र है. जो भी नेता इनके खिलाफ खड़े हैं उनको धड़पने की कोशिश की जा रही है, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप बैठेगी नहीं. एक एक कार्यकर्ता हम लोग जान देने के लिए आज तैयार है. आपको क्या कहना है? जयंत पाटिल जी को अभी बुलाया गया, जयंत पाटिल जी अंदर गए, आपको क्या शेयर करना है? मतलब ये जो मैडम बोल रहे हैं हम लोग उसको मैडम को बोलना है और जयंत पाटिल को हमको ये करना है. So we heard these are the NCP party workers who have gathered over here. A kind of a very expressive protest has been seen here at the NCP headquarters in South Mumbai. Jayant Patil has gone to the ED office. He spoke to the media, basically saying that he has no connection with the infrastructure leasing and financial services case. He has no link to the institution. He has not taken any kind of a loan from the institution. He has no idea why he has been summoned. This is the second such summons that have been issued to Jayant Patil, and now he has gone to the ED office. आपको क्या कहना है? जयंत पाटिल साहब अभी ED ऑफिस गए हैं. आपको जयंत पाटिल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बहुत नाइंसाफी है. ये मोदी जी की बड़ी. What do you want to say? Jayant Patil has been summoned by the ED office. क्या बोलना है आपको? Today is the day of happiness. Before 1947, anyone who stood against the Britishers were either hanged, sent to Kala Pani, or sent to jail or killed. We are proud that our Neta, Jayant Patil Sahab, did not get bribed. He was the one who said no to Bharatiya Janata Party. He was the one who stood against all the lies and the propaganda of Bharatiya Janata Party to end
Modi's and Amit Shah's dictatorship in India. Today we stand here in his support. We are happy that yes, हमारा नेता ईमानदार है, हमारा नेता बेकाऊ नहीं है. Well, Pratibha, you can see a minor tussle is also being seen between the police deployment over here, which is also very heavy, and the NCP workers who are very aggressively and expressively protesting for their Neta Jayant Patil. Modi! 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 All right, so the supporters continue their protest, giving a clean chit to Jayant Patil even as the probe is ongoing, saying he is being targeted because he took on the BJP. Arunil, thank you for joining us with those details. That's all we have time for. Slipping into a short break here. We'll be right back. I'm वंशिका और मैं आज अनबॉक्स करने वाली हूँ ये वाला फ़ोन. ये है टेक्नो फैंटम V Fold. ये इंडिया का करंटली चीपेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है. चलिए अनबॉक्स करते हैं. We have this cool box here और I'm super excited to unbox it. And यहाँ पे they have given their tagline Beyond the Extraordinary. देखते हैं इसके अंदर फ़ोन extraordinary है कि नहीं. Here is the phone. इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे. Let's see what's there further. We get this packet kind of a thing. We have SIM ejector tool here, and we have some usual paperwork here, warranty cards, and some user manual. We get the cover also. बहुत ही cool सा matte finish वाला इसका cover यहाँ पे available है. And then we have जिसमें हमारे पास चार्जिंग केबल अवेलेबल है. 45 watt का चार्जर अवेलेबल है. And that's it. These were all the things that were available inside this box. I'm sweating guys. मतलब अनबॉक्स करने के चक्कर में इस फोन को मेरे पसीने छूट रहे हैं. But I'm excited. So, and here is the phone guys. Look at this beast. इसका जो मेन स्क्रीन है वो 7.85 इंचेस का है. मतलब अगर आप स्ट्रीम करना चाहते हो, गेम खेलना चाहते हो, बढ़िया फ़ोन है आपके लिए. इसका जो सब स्क्रीन है वो 6.42 इंचेस का है. कटआउट पंच होल अवेलेबल है. इसमें 50 मेगापिक्सल्स का रेयर ट्रिपल कैमरा इसमें अवेलेबल है. इसका जो बैक पैनल है वो टेक्सचर्ड है, बहुत ही प्रीमियम फील है. इसका जो वेट है वो 2.99 ग्राम्स है, जिसमें मतलब मुझे थोड़ा सा भारी लग रहा है, बट इट्स फाइन राइट. इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है. और इसकी कूल चीज़ ये है कि इसमें 2 बैटरीज हैं. मतलब 5000 mAh है, 2 स्क्रीन्स हैं, तो 2 जगह बैटरी अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू वी गेट इन दिस फोन. यूजुअल है जो पावर बटन होता है, वॉल्यूम बटन होता है. इसका जो फ्रेम है बहुत ही क्लासी फ्रेम है. ये रोज गोल्ड कलर का है. इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, एक ब्लैक एंड द अदर वन इज वाइट. वी गॉट द वाइट वन क्योंकि वाइट वाला ज़्यादा प्रिटी लगता है. दैट्स माई ओपिनियन. बाकी इट्स सब्जेक्टिव. इसको ऑन करके देख लेते हैं एंड विल टॉक अबाउट द फोन फर्दर. इसमें एमोलेड डिस्प्ले अवेलेबल है. इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अवेलेबल है. 12 GB का रैम अवेलेबल है. 256 GB का स्टोरेज है जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो. Do you love the air that you breathe? Well, I don't, because it has got lot of pollutants, harmful toxins, dust, pollen and whatnot. Well, to curb that situation, Xiaomi has come up with a new product which is called Xiaomi Air Purifier 4. Hi, you're watching Edge Times. This is me, Pavni Jain, and this is the product I'm talking about, the newly launched Xiaomi Air Purifier 4. कंपनी ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है alongside Xiaomi Air Purifier 4 Lite, which is a toned down version of this device. पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Air Purifier 4 की, जानेंगे इसके फिजिकल लुक्स के बारे में, all the buttons that it comes with and all the sensors और the qualities that this Air Purifier offers. This is the front side of the air purifier, जहाँ पर आपको मिलता है OLED डिस्प्ले. इसको जल्दी से पील ऑफ करते हैं इसका कवर. अब इसको ऑन कहाँ से करना है, लेट मी शो यू. दिस इज द बैक साइड ऑफ द एयर प्योरीफायर और यहाँ पर जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिजिकल बटन टू टर्न द डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ. इस फिजिकल बटन के साइड
afternoon and a very warm welcome. Thanks for tuning into Times Now. I'm Kritsween Walia. Well, you're watching the news at noon. Let's first up, as always, begin with the day's biggest headlines. In an exemplary gesture of respect, Fiji and Papua New Guinea recognized Prime Minister's Global South advocacy with their highest civilian honours. Prime Minister Modi to leave for Australia today. Bilateral talks with Australian Prime Minister on cards. Prime Minister also will be meeting the Indian diaspora in Sydney. While lobby parrots Pak agenda denying normalcy in Kashmir, world witnesses the truth as G20 summit kicks off in Srinagar. As three-day Karnataka Assembly session convenes today, Congress sprinkles Gomutra at the Vidhan Sabha to purify it of what it terms corruption by the previous government. RBI Governor Shaktikanta urges people to not panic over the ban of 2,000 rupee notes, says no rush needed. Notes can be exchanged until 30th September. No end to controversy over Bajrang Dal. Now cleric Maulana Arshad Badadi demands Congress to fulfill its promise to ban the outfit as stated in its manifesto. Showdown over new Sansad building as the opposition continues to demand its inauguration by the President and not the Prime Minister. Centre's ordinance unites opposition as Akhilesh Yadav, Nitish Kumar extends support to the Aam Aadmi Party. Kejriwal, meanwhile, will be meeting Mamata Banerjee and Sharad Pawar as well. To red as heavy rains lash Bengaluru, Chief Minister Siddaramaiah takes stock of situation, promises ex gratia to kin of deceased. 3 killed in an explosion while making firecrackers in West Bengal, second such incident in a week. Well, politics speaks ahead of the inauguration of the new Parliament building by Prime Minister Modi, remember, which is scheduled to take place on the 28th of this month. The Congress President Mallikarjun Kharge is out at the Modi government while echoing Rahul Gandhi that the President of the country should unveil the new Parliament building. In a series of tweets, Mallikarjun Kharge accused the government of repeatedly disrespecting propriety by not inviting the President and the former President to inaugurate the new Parliament building. He also stated that the office of the President of India has been reduced to tokenism under the BJP government. इनका मुख्य प्रॉब्लम ये नहीं है, पार्लियामेंट नई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कैसे जो है वो प्रजातंत्र परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चल रहा है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर सकती है। ये इनको हजम नहीं हो रहा है। अब वो डायनेस्टी जो है आज जो है वो एकदम पूरी तरह से डिमोरलाइज है और इसलिए जो है वो आपको याद होगा सेंटर विस्ता की जब बात आई तो उस वक्त इन्होंने तमाम पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर भी शोर मचाया कि कैसे हो सकता है। ये जो व्यवस्था है वो कौन उद्घाटन करेगा कौन नहीं करेगा वो हो जाएगा। आपको भी अगर जनता जो है कुछ 2, 4, 10, 20 सीटें इस बार देगी तो आप भी उसी नई पार्लियामेंट में बैठिएगा। Let me quickly take in a word from Mohit Bhatt joining us live on the broadcast. Mohit, it was earlier Rahul Gandhi who said that it should be the President, not the Prime Minister, who must inaugurate the Parliament building on the 28th of May. Mallikarjun Kharge also now expressing a similar concern as to why is it that the Prime Minister is going ahead with this big inauguration and also seeing a pattern to this. Well, Kritsween, you see, the opposition parties, they have been raising questions on the need for the new parliament. Now that the parliament is ready, the inauguration is all set to be done on 28th of May. We see that host of opposition leaders, specifically from the Congress party, are coming out and they're attacking the government, they're attacking the Prime Minister, saying that why exactly Prime Minister is inaugurating this particular new parliamentary building, why Lok Sabha Speaker, Rajya Sabha Chairperson or the President is not invited for the inauguration. Now, yesterday we saw Rahul Gandhi came out on Twitter and he stated that instead of the Prime Minister, the President should inaugurate the new Parliament building. And today we see Mallikarjun Kharge, the Congress President, has come out and saying that it was a mere tokenism to make somebody from the Dalit community as the President or from the Scheduled Tribes community as the current President, who is Draupadi Murmu, saying that when the inauguration took place, Ramnath Kovind was not invited, and now when the foundation laying took place, the Ramnath Kovind was not
invited, and now that the inauguration is taking place, Draupadi Murmu is not being invited. So the Congress party is trying to completely politicize this issue, while on the other hand, the BJP has been maintaining this. The Congress had problems with the new parliament building since the foundation laying ceremony. First, they stated that what is the need of having new parliament building, and now they are talking about that who exactly should inaugurate this particular new parliament building, which is to be inaugurated by the Prime Minister on 28th. And they are also saying it is an official invite from Lok Sabha Speaker Om Birla to Prime Minister Narendra Modi, and now Prime Minister will be inaugurating this. So we see that politics is speaking on this particular issue. On 28th, the Prime Minister will be inaugurating the new parliament building, which is the part of the redevelopment of the Central Vista project. And we see, and surely the opposition parties are coming out. We see that various opposition leaders, including Asaduddin Owaisi, leaders from RJD, TMC, they have stated that the Prime Minister is head of the executive, not the legislature. Then why exactly is he inaugurating the new parliament building? So the parliament, this particular issue is being